तो फर्स्ट इज दैट कि इंटर वेराइटियल क्रॉस ब्रीडिंग। तो एज पर द स्टेटमेंट वी एक्चुअली वी टोल्ड यू अ क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, दैट मीन्स कि द क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स इन सिमिलर स्पेसीज, इन सिमिलर स्पेसीज। दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे इसमें कि एक ही नस्ल के दो फसलों के बीच, दैट मीन्स दो क्रॉप्स के बीच क्या होगा, क्रॉस ब्रीडिंग होगा, क्रॉस ब्रीडिंग होगा। और इंटर स्पेसिफिक क्रॉस ब्रीडिंग, दैट मीन्स कि अ क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट स्पेसीज ऑफ सेम जीन्स, ऑफ सेम जीन्स। इसमें क्या होगा कि टू डिफरेंट स्पेसीज होगा बट सेम जीन्स हो जाएगा। दैट इज द मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज द मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट वन इज दैट कि इंटर वेराइटियल क्रॉस ब्रीडिंग इन विच क्या होगा कि अ क्रॉस बिटवीन टू different varieties of crops in similar species, in similar species. Second one is that कि interspecific cross breeding, interspecific cross breeding, a cross between two different species of the same genes, of the same genes. Third point is the markable point is that कि note that कि the new varieties of crops obtained, the new varieties of crops obtained, that means new varieties of crops obtained by this process. By this process, that means process is that hybridization. Process is that hybridization obtained by hybridization are called high yield or HYB seeds. So if someone is asking you, या फिर someone is maybe asked you कि what is HYB? What is HYB? So you can write high yielding seeds. HYB, so you can read high yielding seeds. That means the seeds getting from the plants that we call hybrid plants. So the new variety of crops obtained by the hybridization. That means कि after getting the new variety of plants, उससे जो ग्रेन्स होगा, दैट मीन्स जो सीड्स होगा, उस सीड्स को हम लोग बोलेंगे हाई यील्डिंग सीड्स और HYB सीड्स। क्या बोलेंगे उसको? हाई यील्डिंग सीड्स और HYB सीड्स। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि व्हाट इज, अब देखो क्या हो गया। तो बेसिकली क्या होगा कि 60 के दशक, एटलीस्ट 60 या 70 के दशक में, दैट मीन्स कि ग्रीन रिवोल्यूशन, दैट मीन्स कि क्या होगा सडनली क्विक, दैट मीन्स या फिर सडनली क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में, दैट मीन्स या फिर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स के क्षेत्र में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई। दैट मीन्स कि क्या हो गया, फसलों का उत्पादन सडनली क्या हो गया, बढ़ गया। दैट मीन्स कि नए तकनीक को इंट्रोड्यूस किए हम लोग क्या किए कि नए तकनीक को इंट्रोड्यूस किए कि आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग ऑल द तकनीक्स we got the better production of crops, that is called better production of crops। और उससे क्या हुआ कि हमारा फसलों का पैदावार बढ़ा और जो हमारा नीड्स ऑफ द फूड किससे क्या होगा, फुलफिल होगा। दैट मीन्स ऐसा नहीं कि द ग्रेन्स हायर प्रोडक्शन के बाद उस ग्रेन्स का क्वालिटी नहीं रहा, दैट मीन्स दे हैव प्रॉपर क्वालिटी, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रीन रिवोल्यूशन। दैट मीन्स ग्रीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। ग्रीन रिवोल्यूशन इज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। मे बी क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज ग्रीन रिवोल्यूशन। तो एज पर द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज ग्रीन रिवोल्यूशन। तो एक्चुअली आई टोल्ड यू कि आफ्टर गेटिंग द हाइब्रिड सीड्स, आफ्टर गेटिंग द हाइब्रिड सीड्स, द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स हैज लीड टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। दैट मीन्स कि जो होगा कि हाइब्रिड सीड्स की वजह से, दैट मीन्स ड्यू टू द हाइब्रिड सीड्स, तो क्या होगा कि एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन हुई, दैट मीन्स इज मोर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स या फिर प्रोडक्शन ऑफ अदर क्रॉप्स या फिर प्रोडक्शन ऑफ अदर ग्रेन्स इज मोर, लीड दैट मीन्स बढ़ गया, लीड्स प्रोड्यूस प्रोडक्शन कंसिडरेबली रिड्यूस फूड शॉर्टेज और प्रोडक्शन। दैट मीन्स कि ड्यू टू हाई प्रोडक्शन द फूड शॉर्टेज इज रिड्यूस। जो भी फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी, दैट कैन बी रिड्यूस ड्यू टू द हाई प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू द हाइब्रिड seed and generated more income in the agriculture, this is called the green revolution। That means green revolution, simply we will define green revolution is related to the production of crops। The production of crop, that means accelerated, production of crop accelerated or
मोर ड्यू टू द हाइब्रिड सीड्स, HYV सीड्स, मतलब HYV सीड्स के कारण एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, दैट मीन्स एग्रीकल्चर मतलब कृषि में जो पैदावार हुई बहुत ही ज़्यादा आज पर दैट मीन्स कि आपके आशा के अनुरूप से ज़्यादा, दैट मीन्स मोर। उससे क्या हुआ कि मेरा जो फूड शॉर्टेज था, फूड शॉर्टेज का जो प्रॉब्लम था दैट कैन बी मिनिमाइज्ड और एक्सेस प्रोडक्शन के थ्रू क्या हुआ कि मेरा इनकम बढ़ गया, मेरा इनकम इंक्रीज कर गया। हम लोग क्या किए कि रिक्वायरमेंट फुलफिल के बाद जो भी रेस्ट ऑफ द ग्रेन्स या फिर जो भी फूड ग्रेन्स बचा उसको हम लोग सेल करने लगे। इससे क्या होगा, मेरा इनकम भी क्या हो गया, इंप्रूव कर गया। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन, दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन। तो सेकेंड पॉइंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। आवर सेकेंड पॉइंट इज दैट कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, दैट मीन्स कि वी कैन चूज बेटर क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, वी कैन चूज बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स, वी कैन चूज बेटर क्वालिटी ऑफ better process in which we can improve the production of the crops, production of grains and production of the vegetables and all those things. That is the first point कि variety of crops. अब second is that कि production of crops. Second point is that कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट refers to controlling different aspects of crop production to obtain the maximum and best yield. To control the maximum and best yield, that means कि crop production management is the combination of process, that means कि in which there are three basic process is performed. The first one is this nutrient management, irrigation and crop pattern. So basically कि crop production management is classified in three ways. First one is that nutrient management, second one is irrigation and third one is cropping pattern. So that is the crop production management. तो basically हम लोग अब वन बाय वन इसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो बेसिकली क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट ये क्या करता है कि डिफरेंट एस्पेक्ट को प्रीफेयर करता है, दैट मीन्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन टू ऑब्टेन मैक्सिमम एंड बेस्ट यील्ड, दैट मीन्स प्रोडक्शन, पैदावार। यील्ड मतलब प्रोडक्शन, दैट मीन्स पैदावार। तो इसमें क्या है, बेसिकली थ्री प्रोसेस है। फर्स्ट वन इज द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सेकेंड वन इज द इरिगेशन एंड third one is that cropping pattern. Nutrition, that means as we know that कि every living things is taking food. Why? Because they needs nutrients for doing all the physical work or maybe for surviving this living world. Nutrition, so that means कि nutrients management, that means कि plants or crops, they also needs nutrients, that is the important for growth of the plants and for other activities of the plants, growth and other activities, simply रोगों से बचने के लिए, बेटर प्रोडक्शन के लिए एंड ग्रेन्स को क्वालिटीफुल, दैट मीन्स ग्रेन्स को डिजायरेबल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट मीन्स न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। इरिगेशन इज द पार्ट, दैट मीन्स सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स, व्हाई? फॉर लूजनिंग द सॉइल, दैट मीन्स सॉइल क्या होगा, मेरा लूज होगा और क्या करेगा, प्लांट्स को मेरे को वाटर चाहिए, तो क्या करेगा, प्लांट्स absorb the water from the soils. तो बेसिकली क्या होता है, इसको मैं सिंपली डिफाइन कर लेते हैं। इरिगेशन, एज वी नो दैट कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कंप्लीटली मिक्सड इन सॉइल। सपोज करो कि हम फर्टिलाइजर या मैन्योर यूज कर रहे हैं, सपोज वी विल यूज द फर्टिलाइजर और मैन्योर, तो बेसिकली हम लोग उसको जैसे एक्सपैंड करेंगे, दैट मीन्स उसको थ्रो करेंगे ऑन द फील्ड।
जब भी हम उसको थ्रो करेंगे ऑन द फील्ड, आफ्टर दैट द क्रॉप्स रूट्स टेकिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सीड्स, सॉरी फ्रॉम द सॉइल। तो अगर उस प्लांट्स को हम, अब सपोज दैट कि न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, डिस्पेयर कर रहे हैं, जो भी एक्सपेंड कर रहे हैं, जो भी थ्रो कर रहे हैं ऑन द सरफेस, ऑन द सॉइल, दे आर इन सॉलिड फॉर्म, दे आर इन सॉलिड फॉर्म एज पर द स्टेटमेंट कि the plant's roots cannot absorb directly the solid nutrients, they cannot able to absorb the solid nutrients। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, उसको हमको डिसॉल्व करना पड़ेगा। ऑल द न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिसॉल्व इन द सॉइल, बट हाउ? द सिंपल प्रोसेस इज इरिगेशन। That means simple process is irrigation. That means due to supply of water, that means in the presence of water, the solid nutrients can be dissolved in soil, or they make as a solution. They can make as a solution. After that, the plant roots or crop roots absorb all the necessary nutrients from the soil, which is dissolved in the soil as a solution. तो irrigation हो गया कि why is irrigation important? Nutrient, why nutrient? What are the nutrients? That means simply you see nitrogen, phosphorus, sulfur, iron, and all the nutrients and other etc, etc. These are the essential nutrients for the plants. As we know that nitrogen is the major essential nutrients for the plant. Why? That is the important things, that is the important nutrients. नाइट्रोजन बेसिकली क्या करता है कि प्लांट्स का ग्रोथ के लिए काम करता है, मीन्स तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। इस न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे, इरिगेशन। तो आफ्टर न्यूट्रिशन इरिगेशन, दैट मीन्स आपने आपको एक्सप्लेन किया अभी, जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है क्रॉप्स के लिए, उसको हम लोग थ्रो करेंगे ऑन द सॉइल। तो दे आर इन सॉलिड फॉर्म, एज वी नो दैट कि द प्लांट रूट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि रूट्स जो है वो प्लांटेड है इन द सॉइल। तो क्या करेंगे हम, उस न्यूट्रिएंट्स को ड्यू टू इरिगेशन क्या करेंगे, घुलाएंगे, दैट मीन्स डिसॉल्व करेंगे इन द सॉइल as in the form of solution. After that, the plants roots easily absorb all the necessary nutrients from the soil. First one is this cropping pattern. Pattern मतलब that means arrangement, मतलब कि कौन से प्लांट्स को हम लोग लगाएंगे और कौन से प्लांट्स को हम लोग नहीं लगाएंगे। तो हम लोग थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन को समझ के। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है, बेसिकली एक क्या है, कम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस है। वो भी क्या करता है, सिमिलर फोकस, सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स, मैक्सिमम प्रोडक्शन, बेटर क्वालिटी यील्ड्स, बेटर क्वालिटी ग्रेन्स, एंड क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट आर maybe crop production management are combining nutrients management, irrigation and cropping pattern. तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कि प्लांट्स रिक्वायर 16 डिफरेंट, एक्चुअली आई टोल्ड यू कि न्यूट्रिएंट दैट इज द इम्पोर्टेंट, दैट इज द इसेंशियल थिंग्स, दैट इज द इसेंशियल एलिमेंट और इसेंशियल कंपाउंड, दैट इज द इसेंशियल एलिमेंट और इसेंशियल कंपाउंड फॉर द प्लांट। तो प्लांट्स रिक्वायर 16 डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स which are obtained by air, water and soil, that means कि all the necessary nutrients can be absorbed, can be obtained by the plant in 3 sources. The first one is that air, second one is that water, और third one is that soil. तो plants nutrients can be classified into 2 ways. Plant nutrients, that means कि 16 nutrients जो है, there are 16 different nutrients. These 16 different nutrients can be classified into 2 categories, or 2 ways. First one is macro, that means maximum amount. Macro that means bigger. Macro that means bigger or maximum amount. Maximum amount.
amount. That means कि all the nutrients that can be used in maximum amount, that can be used in maximum amount by the plants, उसको हम लोग बोलेंगे मैक्रो, मैक्रो नॉट माइक्रो, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटीज. दैट मीन्स कि मैक्रो, दैट मीन्स कि लार्ज, मैक्सिमम. तो मैक्सिमम अमाउंट में जो भी न्यूट्रिएंट्स यूज होगा प्लांट्स को, मैक्सिमम अमाउंट में जो भी न्यूट्रिएंट्स यूज होगा प्लांट के लिए, उस न्यूट्रिएंट्स को हम लोग बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज quantities. Nutrients required by plants in large quantities, that can be say that macronutrients. The 6 macronutrients, that means there are 6 macronutrients which is necessary for the plant. First one is nitrogen, second one is phosphorus, third one is potassium, fourth one is calcium, fifth one is magnesium, and sixth one is sulfur. Sixth one is sulfur. So these are the essential nutrients for the plants. These are the essential macronutrients for the plants. These are the essential macronutrients for the plants that can be used in large amount, that can be used in huge amount, large amount or maximum amount by the plants. By the plant. And second one is the micronutrients. Second one is the micronutrients. Micro, that means small. That means small or quite amount, you have a little amount. So that means you can write similarly कि plants nutrients, you can write similarly कि micronutrients required by the plants is low amount. Micronutrients, that means micro means small, छोटा. Macro means small और छोटा. That means कि micronutrients इसकी जो रिक्वायरमेंट होगी फॉर द प्लांट्स को बहुत ही लिटिल अमाउंट्स में, उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. द फर्स्ट वन इज दैट मैक्रो और सेकंड वन इज दैट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. सेकंड वन इज दैट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. माइक्रो दैट मीन्स स्मॉल, दैट मीन्स माइक्रो. माइक्रो दैट मीन्स स्मॉल, स्मॉल और लेस. That means nutrients required by the plants in small quantities. Macronutrients, that means कि nutrients required by the plants in less amount, in small amounts. Small quantities, small amount, less amount, फिर less quantities, same things. The 7 macronutrients are the 7 macronutrients which is used by the plants are iron, manganese, boron, zinc, copper, molybdenum, and chlorine. These are the micronutrients. These are the micronutrients essential in our micronutrients. These are the essential macronutrients which is used by the plants, and all the nutrients can get, that means absorbed by the soil, by the plant's roots. So these are the basic things. The nutrition management basically उसको हम लोग समझ गए आप क्लियरली. न्यूट्रिशन मैनेजमेंट क्लियरली हम लोग समझ गए कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है क्या, कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द न्यूट्रिशन मैनेजमेंट. तो बेसिकली और कि what are the classification of nutrition management, what is micronutrition and what is macronutrition, which are the micronutrients and which are the macronutrients. Briefly we will discuss all the points. Next I will give you 9 questions. You have to write the answer and send it on your WhatsApp. So there are 7 questions you have to write, you have to answer. There are 7 questions you have to write or answer. The first question is that what are the benefits of organic farming? So you have to write the benefits of organic farming. Second question is that what is aquaculture? What is aquaculture or define aquaculture is the same things. So you have to answer what is aquaculture. Third question is that what are weeds? What are weeds? Actually I told you what is weeds in our previous classes. Who is the father of green revolution? Who is the father of green revolution? Fifth one is that from where do plants obtain hydrogen? From where do plants
obtain hydrogen. Sixth one is that how do plants get nutrients? How do plants get nutrients? And last one is that what are macronutrients? What are macronutrients and why they called micronutrients? What are micronutrients and why they are called micronutrients? There are 7 questions you have to solve and you have to write the answer of these questions and send on your WhatsApp group. I hope you will understand all these things, and finally thank you for watching this video, and please answer the questions. It's your duty. It's your duty, and thank you for watching this video and have a nice day.